Anda menikmati Idul seperti kami bertiga. Nama saya Ranomer. nama saya Muhammad Hussein. Nama saya Musahan. आज एक बार बता दे भाई इस वीडियो को लाइक कर देगा भाई मैं और ikutan militer basic jadi BBB Brok Amerika Trump गिरफ्तार Pakistan military di Rusia India China video created by Indra Premana. luar biasa sangat keren dan hebat dan bagus जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स करना इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो के आखिर में हम अक्सर अपने हालात का इजहार करेंगे उसको तो बताते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड Wah, ini sangat luar biasa. Semenjak Indonesia bergabung menjadi anggota penuh BRIC, Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh dari BRIC. kini BRIC makin perkasa, makin mengerikan, dan makin tidak terkalahkan. Dari segi populasi, BRIC kini hampir menguasai setengah jumlah penduduk dunia. Dan dari segi ekonomi, GDP BRIC saat ini sudah menguasai 41%. Ekonomi global sudah jauh melewati GDP G7 yang merupakan organisasi ekonomi internasional yang dibentuk oleh Amerika dan sekutunya, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Kanada, Jepang, dan Jerman. Dan ternyata ada lagi kekuatan BRIC lain yang selama ini tidak atau belum dilirik dunia. Ya, karena kekuatan yang satu ini memang saat ini bukanlah yang ditonjolkan oleh BRIC. Sebab saat ini fokus BRICS hanya baru pada kekuatan ekonomi baru dunia yang akan membabat habis dolar Amerika. Namun percayalah, kekuatan yang satu ini akan membuat Amerika bisa menjadi hancur lebur. Ya, kita akan bicara di luar kotak sedikit kali ini ya. Adapun kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan militer anggota-anggota BRIC. Ya, jika bicara kekuatan militer BRIC, maka saat ini jika digabungkan kekuatan militer anggota BRIC bisa membuat Amerika babak belur. Terlebih lagi saat ini Amerika sedang bermasalah dengan sekutunya sendiri karena Donald Trump saat ini sedang berupaya mencaplok wilayah yang saat ini dimiliki para sekutunya. Sebut saja Kanada, Greenland, dan terusan Panama. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ingin memperluas wilayah Amerika Serikat dengan menguasai sejumlah negara, mulai dari Kanada hingga terusan Panama dan terakhir Greenland. Ya, saat ini sekutu Amerika sendiri sedang panas dengan Amerika akibat arogansi dari Donald Trump. Dengan begitu, militer BRICS kini sangat perkasa dan tentu dapat menghantarkan militer Amerika dengan mudah. Karena saat ini berdasarkan peringkat militer dunia, Rusia, China, India masing-masing berada di urutan 2 hingga 4 militer terkuat di dunia, dan disusul oleh Brazil yang berada di peringkat 11 dan negara kita Indonesia berada di peringkat 13 dunia, yang artinya Indonesia merupakan negara terkuat kelima militer di BRICS. Wah, luar biasa ya. Baik, supaya mengobati rasa penasaran akan seberapa perkasanya sih kekuatan militer BRICS. Baik, mari kita saksikan sama-sama parade militer 5 negara terkuat militer BRICS. Dari mulai yang pertama, Rusia. Rusia Внимание! На край! Площадь государственная. Верно! Для встречи слева! Победы в Великой Отечественной войне! Годовщиной победы в Великой Отечественной войне! За Россию! За победу!
Ура! Amin. Memuaskan. Батальонно! China, China. Kurang roti.万岁！同志们辛苦了！同志们好！同志们好！同志们好！同志们辛苦了！India, India. Ya, terbukti.
Brazil. Indonesia. Indonesia. Oh, mantap. Keren, sangat keren. Joko Widodo. Dan pejuang-pejuang bangsa Laksanakan serbuan ke bawah. 9 prajurit bersiap melaksanakan serbuan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Melaksanakan anak panah ke sasaran. Hadirin TNI dari Trimatra sama jalannya demo. Hadirin sekalian, selanjutnya melintas dari sebelah kiri kita, prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan mobil berusaha membantu rekannya. dengan semangat yang luar biasa. Cukup kuat. Selanjutnya alihkan pandangan mari kita saksikan. Dan bom telah diledakkan. Selanjutnya, Yang akan menyerang. pengamanan bergerak ke depan, membantu melaksanakan pembersihan. Dugaan negara. Dari jalan padium, bangsa. Di pagi yang cerah, aduh bang. Dan udara, Dito, SSS Mantap, sangat keren Indonesia. yang mendukung tugas pokok sebelum geospasial. Nasional Indonesia. Muncul di barisan besar terbaru milik TNI. Merupakan tank ringan generasi. Disusul berikutnya 1 unit RPM. Hadirin yang berbahagia, tank Leopard 2M. Unit Jammer Hubat. Bahkan gabungan dari kekuatan sistem unit RIM adalah melintas Karman kita tiga unit Ranpur BTR 4. Ranpur BTR 4 sangat merupakan kendaraan amfibi berlapis baja yang di hadapan kita bersama. 11 unit kendaraan tempur amfibi BTR 5 hadapan kita bersama. 7 unit kendaraan tempur LVT 7A1 kan disusul KRI kelas Marching. Menyusul berikutnya adalah alutsista milik resimen Dan sebagai penutup, Resimen Bangkon kanan podium dan bersiap melintas dari sebuah rangku serbu M-kan dalam mendukung misi komando pasukan lintas di hadapan kita bersama. 100-200 yang untuk 19 formasi pesmen yang pertama, Dragon. Masa siang hari ini.
Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini sekilas info untuk kekuatan militer BRICS. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar info update ini? Teman-teman seneng nggak mendengarnya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman akan menjadi edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi itu adalah info update untuk Indonesia BRICS. The leading member of BRICS. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune Ya, subscribe di channel. video. Bye bye, goodbye, next video. ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने मुख्तलिफ मुल्कों की मिलिट्री फॉर्मूला दिखाई है और जिसमें इंडोनेशिया की लास्ट में थी वो तो कमाल का दिया, बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री फौज है। ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। सो गाइस यार, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंतहा से ज़्यादा मज़ा आ गया इस वीडियो को देख के। पहले तो मैं वीडियो को ऐसे समझ रहा था कि ये बोरिंग है, मगर जब मैंने देखा कि ये इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन लोगों की जो फौज के जो करैक्टर देखे वो बहुत ही कमाल के थे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ये ना कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ यार, ऐसे लग रहा था। मगर ये तो कमाल हो गया, बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियो थी और मज़ा आ गया इससे। वाकई यार, आज की वीडियो ने कमाल कर दिया है। इंडोनेशिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इंडोनेशिया ने ये चीज जो कर दी है ना, ये किसी आदमी को नहीं चाहिए, सबने किया, लेकिन सबके अगल अपने अपने स्टैंड थे। लेकिन जो इंडोनेशिया ने स्टैंड किया ना यार, वो माइंड ब्लोइंग था। उधर आपने देखा होगा हमारा रिएक्शन क्या था यार, हम चेयर उठने लगे थे। इतने कमाल के इन्होंने इंडोनेशिया ने जो है काम किए हैं, इनकी आर्मी को वाकई यार दोनों हाथों से मैं सल्यूट करता हूँ यार। माइंड ब्लोइंग। वो जो ऊपर जब उन्होंने जहाज जंप किया था वो सीन कमाल का था। और भाई ने वीडियो भी अच्छी शूट की है और इसमें ये भी बताया गया कि इंडोनेशिया ने सब के तोते उड़ा दिए हैं इस चीज के लिहाज से। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।